So in the previous session, we have seen one example of Bayes theorem, and that is selection of the ball from selection of the fruit from the basket. There are multiple baskets, and each basket contains multiple fruits. So if the question is the straightforward, without knowing the without having knowledge about fruit or identity of fruit, if you want to find the probability of selecting particular basket, then it will be what I can say, uh, prior probability, right? And you can you can straight away calculate that probability. But okay, and one more thing is, when it is asked that what is the probability of particular fruit given basket, we can use a conditional probability formula which shows the relationship between the conditional probability using product rule, in which we have relationship between conditional probability and joint probability, right? So conditional probability equal to joint probability divided by probability of the denominator, means basket, if we talk about that. And if you want to find a reverse probability, that is probability of finding basket given the fruit is orange or given fruit. So for that we can use Bayes theorem, and at the end we conclude that in cancer diagnosis case, we conclude that though let me quickly revise this. Though the percentage of people with cancer test positive, there is a testing agency who perform some test for the cancer, and the person who are having a cancer and that person gets test as positive means cancer hai. So accuracy is very much high, but and accuracy at the same time, the percentage of people without cancer test negative is also good. But at the conclusion, we can see, forget about this, we can see that the probability after applying the Bayes theorem, and for the denominator, if we apply some rule, means if you want to calculate probability of getting positive, then it can be positive with cancer and positive with not cancer, right? So we'll do addition of both, and finally applying the values, we can say the probability, once the patient is getting test as positive, even though after that, the percentage or probability that person has actually cancer is very less compared to the 99 percentage. It is just 0.33, right? That we have seen. Fine. So let us try to demonstrate this with use of numbers. For example, if you want to find probability of cancer given the test is positive, जो चीज हमने पहले सोची, that for formula, if you want to write in general terms, you can say it is number of people with cancer testing positive divided by number of people testing positive. We know that the test is positive, that is already given, so we are not focusing anything regarding test is negative. So how we can calculate this? Simple, total number of testing positive and number of people with cancer testing positive. So this is another way. So what we can do, consider a population of 10,000 people. हम एक जनरल वर्ड अंडरस्टैंडिंग पर्पज से हम ये जनरल स्टेटमेंट ले रहे हैं कि 10,000 लोग टेस्ट के लिए जाते हैं, राइट? तो उसमें से हमें सबसे पहले तो ये क्या करना है, पीपल विथ कैंसर
इन द एरिया जहां पे हम बात कर रहे हैं, द पीपल विथ कैंसर आर 0.5 percentage. So what I can say, it is 0.005 into 10,000. So out of 10,000 people, yeah, we are finding this probability, but this is also main factor. Okay, how many people are having cancer? What is the probability of getting cancer in that area? And that is given as 0.5 percentage. वो 0.5 percentage already दे दिया गया है. So there are only 50 people. 50 लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर है out of 10,000. 10,000 में से 50 लोगों को कैंसर होगा. And now if you want to calculate this probability that जो जिन लोगों को कैंसर है उनको पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेस्ट पॉजिटिव इफ दैट पर्सन इज हैविंग कैंसर इज 99%. वो प्रोबेबिलिटी क्या है, 99% मींस टोटल कितने लोगों को पॉजिटिव अप्रोक्सीमेट आया होगा, 50 लोगों में से का 99% मींस 49 पॉइंट समथिंग एंड अप्रोक्सीमेटली वी कैन से जितने लोगों का जिनको एक्चुअली कैंसर है उनके टेस्ट में पॉजिटिव आया ही होगा, उनका तो टेस्ट पॉजिटिव ही होगा, राइट. So that is for sure. But on the other hand, people without cancer is 9950. With cancer सिर्फ 50 लोग हैं और without cancer लोग कितने हैं, 9950. अब out of this, इनमें से कितने लोगों का पॉजिटिव आया होगा, what I can say. तो सबसे पहले जिन ये लोग कैंसर के बिना वाले पेशेंट है ना, दिस आर द पीपल विदाउट कैंसर, सो नॉन कैंसर पर्सन्स. तो उनका टेस्ट नेगेटिव आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके परसेंटेज क्या है, 99% गारंटी है कि इनका टेस्ट नेगेटिव ही आएगा. इसका मतलब है कि 9950 का अगर हम 99% फाइंड करें तो उतने लोगों का टेस्ट नेगेटिव आएगा और रिमेनिंग लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आएगा. इज इट क्लियर? सो आउट ऑफ दिस नंबर ऑफ पर्सन्स 0.01% ऐसे लोग हैं जिनका वो जो 99% का रिवर्स 1%, सो 0.01 into 9950, सो देयर आर 100%. तो टोटली 100 लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर नहीं है और फिर भी उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है, फिर भी उनका टेस्ट क्या आता है, पॉजिटिव. सो नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला, if you want to find probability of this having cancer given test is positive, तो number of people with cancer testing positive, जिनको कैंसर है और उनका टेस्ट पॉजिटिव आता है वो कितने लोग हैं, 50. और नंबर ऑफ पीपल टेस्टिंग पॉजिटिव 50 plus 100, that is 50 divided by 50 plus 100, this will give you 0.33, right. And from this what we can conclude, from this what we can conclude that because of this reason 0.5, only 0.5% people are having what I can say cancer in that area, right. So or this is wrong thing कि people without cancer बहुत ज्यादा लोग हैं और उनका छोटा परसेंटेज भी हम कैलकुलेट करेंगे, दो द एक्यूरेसी इज 99%, एक्यूरेसी 99% है, फिर भी इसका 99% एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि 1%, 100 में से एक का रिजल्ट, भले कैंसर नहीं है फिर भी 100 में से एक का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. बट ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर नहीं है, तो ये नंबर की वजह से हमें ज्यादा टेस्ट पॉजिटिव. ये 100 टेस्ट पॉजिटिव का मतलब क्या, आपको समझ में आया कि इनको कैंसर नहीं है फिर भी पॉजिटिव आया, तो दिस इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव. एक्चुअली पॉजिटिव नहीं आना चाहिए फिर भी पॉजिटिव आया. सो द मेन रीजन, द प्रॉब्लम विद द एक्चुअल कंडीशन, जो हमने बेसिकली सोचा था कि 99% एक्यूरेसी है पॉजिटिव आने की, अगर कैंसर है तो 99% पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव आने की अगर वो कैंसर नहीं है तो इतना एक्यूरेट रिजल्ट होने के बाद भी ये इतनी लो प्रोबेबिलिटी मिलना,
मिलने का एक रीजन है बिकॉज वी वांट टू नो दिस। तो हम ये टेस्टिंग एजेंसी पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो टेस्टिंग एजेंसी ने अगर 0.33% उन्होंने जो भी बोला, अगर कि इनको कैंसर उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो उस जितने लोगों को पॉजिटिव आता है उसमें से सिर्फ 33% लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली कैंसर होता है। बाकी 66-67 अराउंड परसेंटेज लोगों को तो होता ही नहीं है, राइट। तो अगर आपको इफ यू वांट टू इंक्रीज दिस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिक्रीज दिस वैल्यू। कि कितने लोग पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव है ना, वो डिक्रीज करना पड़ेगा। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग आइदर इंक्रीजिंग दिस वैल्यू, या तो फिर ये इंक्रीज, अगर आपको ऐसा बोला गया कि पॉपुलेशन में से 50% लोगों को तो कैंसर होता ही है, देन यू विल कैलकुलेट 50% यहाँ पे आएगा, 50% यहाँ पे आएगा, देन द रिजल्ट इज एक्यूरेट। तो ये परसेंटेज इंक्रीज होंगे कि पीपल विथ कैंसर, then also you can say your testing result will be good. Otherwise, if you can reduce this false positive value, अगर हम false positive value को reduce कर सकते हैं ना, that is of good advantage if you can reduce this, because false positive अगर हमने reduce कर दिया तो वो actually क्या होगा, अगर मैंने बोल दिया कि 0.001%, तो सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे जिनको कैंसर नहीं होगा और उनका टेस्ट क्या बोलते हैं पॉजिटिव आएगा। तो उस हिसाब से जब देखेंगे तो 50/60 आंसर हो जाएगा। अगर मेरा आंसर है 0.001, अगर उतने लोगों का ही एक्यूरेट है, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव मैंने रिड्यूस कर दिया, देन माय प्रोबेबिलिटी विल गेट इंक्रीज्ड। सो दिस इज द रीजन, जो हमने पहले इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, बट फ्रॉम दिस वी कैन इजीली वेरीफाई the correctness of that website or that testing agency, and this can be applicable at many platforms, many cases. In many cases we can use the same concept, right? So affecting factor, people without cancer is big number, and the second affecting factor is false positive, and we need to change this, because people without cancer is big number that is actually good. अगर जिनको कैंसर नहीं है वो बहुत ज्यादा संख्या में है, so this situation is good for us. So we don't do anything with this. We need to reduce this by increasing the percentage, or by, we can say, by reducing this number, increasing the percentage। जो 99% एक्यूरेसी दी थी, अगर वो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत और बढ़ जाए, कौन सी एक्यूरेसी, getting test negative if cancer patient is without cancer। अगर पर्सन को कैंसर नहीं है, उसका नेगेटिव आने की एक्यूरेसी दी थी 99%, लेकिन वो हमें इंक्रीज करके हमारे टेस्टिंग एजेंसी को अपना वैल्यू इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज नो वन विल ट्रस्ट ऑन देम, राइट। सो दिस कैन बी यूजफुल इन many what I can say, medical field, so many fields of medical science. Everywhere, whenever you have to take reports, you can focus on this. So this is how the Bayes theorem is useful. Then let us take one more example. Okay, गलती से ये नंबर, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट पहले से छप गया है, I am sorry for that. So let us have one more example of weather forecasting. Let us assume that you want to go for adventure activity, bike ride with friends. आपने आज देखा कि चलो यार बहुत दिनों से घर पे बैठे हैं, बहुत इतने महीनों से घर पे बैठे हैं, तो चलो मौसम भी बढ़िया है, मॉनसून चल रहा है, और आपने सोचा कि चलिए काम करते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव बाइक राइड पे चलते हैं सब फ्रेंड्स मिलके, राइट। तो आपने प्लान बनाया, बट आपके दिमाग में एक छोटा सा डाउट है कि यार अगर आज बारिश हो गई तो क्या करेंगे, है ना। व्हाट इफ इट रेन्स टुडे,
So just a second, let me see the chat section. ओके तो पूजन का कहना है कि अगर घूमने जाना है तो बाइक राइड पे क्यों जाए, वी विल हैव कार पे चलेंगे, कार के थ्रू चलेंगे. या दैट इज वन सॉल्यूशन, बट या श्योर पूजन का ये भी कहना है कि नाम मत बोलो सर. एज्यूम यू वांट टू गो, आपने एज्यूम लिया, लेकिन ऐसा समझ लो कि आपको दिमाग में टेंशन है, पूजन को दिमाग में टेंशन है कि यार अगर उनके पास बाइक है, देखिए कार तो है लेकिन बाइक राइड का जो मजा है ना, ऐसे अगर लद्दाख की बात करें तो बुलेट लेके घूमने का मजा जो है वो कार में नहीं आएगा, राइट. तो पूजन ने डिसाइड किया था कि चलो आज अर्चित का बर्थडे है तो अर्चित के साथ लॉन्ग ड्राइव पे सब दोस्त लोग मिलके चलते हैं. अर्चित है क्या यहाँ पे? अर्चित शायद नहीं है. तो many happy returns of the day अर्चित. Okay, nothing, no problem. I will wish him personally, मैं उनको पर्सनली विश कर दूंगा. एंड अगर अगर किसी के पास क्या बोलते हैं और किसी का बर्थडे है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने विश कर दिया और बाद में पता चला कि उनका बर्थडे तो अगले दिन था, राइट. तो प्लीज if some of your friend is having birthday, you can inform us. मैं तो चाहता हूँ कि सबको इन्फॉर्म किया जाए, उनके खुद नहीं इन्फॉर्म कर सकते लेकिन फ्रेंड तो इन्फॉर्म कर ही सकते हैं, राइट. या then it's your role now to inform all the friends that today is Archit's birthday. Okay, fine, let us move ahead. कि पूजन ने प्लान बनाया, चलिए पूजन को छोड़ रहे, अर्चित ने प्लान बनाया, बर्थडे उनका तो वो प्लान बनाएंगे. तो अर्चित ने सोचा कि चलो बाइक राइड पे चलते हैं, बट उनको दिमाग में एक टेंशन था कि यार आज बारिश हुई तो क्या हुआ. लेकिन ज्यादा सोचने वाले लोग हैं तो उन्होंने क्या किया कि एक अपना मोबाइल लिया और उसमें बेस्ट वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन निकाली, राइट. और वो फोरकास्टिंग एप्लीकेशन में से उनको जॉब मिला कि आज बारिश हो सकती है. देखिए बेस्ट वेदर फोरकास्टिंग एप्लीकेशन इज फ्रॉम अर्चित्स पॉइंट ऑफ व्यू. उनको जो लगा वो उन्होंने सिलेक्ट किया. आई एम नॉट सेइंग दैट इज बेस्ट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेस्ट है, बट उन्होंने अपने हिसाब से लगा कि मुझे ये वेबसाइट ओपन करनी चाहिए, एप्लीकेशन पे उन्होंने देखा कि आज वेदर फोरकास्ट क्या है और वेदर फोरकास्टिंग में दिखाया कि आज पॉसिबल है कि आज बारिश हो सकती है. लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट उन्होंने और ज्यादा डिटेल देखने की कोशिश की कि भाई ये जो वेबसाइट है वो एक्चुअली कितना सच बोलते हैं, राइट. तो उस पे से पता चला कि XYZ फोरकास्ट एक है कि जब रेनी वेदर हो, अगर बारिश होती है तो वो 90% एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं कि आज बारिश होगी. मतलब बारिश हुई और उनका प्रेडिक्शन देखे कि उनका प्रेडिक्शन क्या था. समझिए, सपोज आज बारिश हुई और मैं देखूंगा कि उनका प्रेडिक्शन क्या था, तो वो 90% टाइम एक्यूरेट होगा. तो 100 टाइम्स बारिश होगी, 100 बार बारिश हुई, उसमें वो दिनों की अगर हम मेजरमेंट करें तो 90 टाइम्स ऐसा होगा कि ये वेबसाइट ने प्रेडिक्ट किया होगा कि हाँ बारिश होगी. एट द सेम टाइम अगर ऐसा समझ लो कि 100 बार बारिश नहीं हुई, वेदर ड्राई रहा, तो उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से उन्होंने 80 टाइम्स प्रेडिक्ट किया होगा कि बारिश नहीं होगी. समझिए, ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है कि बारिश हो गई 100 बार, बारिश में से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मींस वी आर कैलकुलेटिंग द फोरकास्टिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग गिवन इट इज रेन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्टिंग गिवन इट इज नॉट रेन. तो वो बारिश हुई थी या नहीं हुई थी वो तो आपको दे दिया गया है. तो इस पे से क्या लग रहा है यार, जब बारिश देखते हैं तो ऐसा समझ में आ रहा है जैसे हमने कैंसर डायग्नोसिस के हिसाब से लगा था. तो आपको क्या लग रहा है कि क्या बारिश होगी या नहीं? आई वांट टू नो.
Otherwise, if you want to ask any additional question, then you can ask. इस और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी? Which information you want, additional information. Otherwise, you can say in the chat section that बारिश नहीं होगी या फिर होगी. I want to know from you. जल्दी जल्दी चैट सेक्शन में लिखिए. आप अर्चित को थोड़ी हेल्प कीजिए कि भले ही फॉरकास्ट बता रहा है कि आज बारिश होगी, लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी है उसके हिसाब से आपका क्या कहना है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट सेक्शन क्विकली. नहीं होगी. कुछ भी खतरनाक हो आप है, जवाब तो खतरनाक ही देते हो. वी नेवर नो. ओके, नहीं आज नहीं. ओके 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 यार, ये आप ऐसा नहीं क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उनका रीजन तो देखो, 100 बार बारिश होती है उसमें तो 90 बार तो वो बोल ही रहे हैं. एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू नीड? पेट्रोल होना चाहिए, हैव अम्ब्रेला और रेनकोट. ओके ओके, नहीं आपका जवाब बहुत सही है. लेकिन जो आप पेट्रोल होना चाहिए वो बात कब की है कि आपको बाहर जाना है या नहीं, वो डिसीजन में. बट अभी क्वेश्चन ये है कि अगर रेन फोरकास्ट हुआ है कि आज बारिश होगी, तो आपको ये बताना है कि क्या सच में बारिश होगी. अगर वो बताने के लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पूछनी है. आप, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको घूमने जाना है या नहीं जाना. दैट इज करेक्ट. ओके, बर्थडे है इसलिए नहीं होगी. ओके ओके ओके, ट्रू प्लस ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव. ओके ओके ओके. भाई तो पब्लिकली बोलो ना. आप पर्सनल में लिखोगे तो दूसरे को कैसे दिखाई देगा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, सो थोड़ा समझते हैं, क्योंकि देखने से तो ऐसा लगा. तो अर्चित ने क्या किया? अर्चित ने सोचा कि यार बारिश होने के चांसेस तो ज्यादा लग रहे हैं, तो उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया. प्लान कैंसिल नहीं किया, चेंज कर दिया. अब उन्होंने सोचा कि चलो भाई, ऐसा तो इससे तो बेटर है कि हम रेन डांस पार्टी अरेंज करें. रेन डांस पार्टी मतलब बारिश में सब लोग दोस्त मिलके सब नाचेंगे. राइट, अर्चित ने ये डिसाइड किया. क्योंकि और इससे फायदा क्या है कि पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि रेन के कोई पैसे देने नहीं है, घर पे ऐसे ही नाचना है. तो उनको लगा कि यार ये बहुत बड़ा आइडिया है, बढ़िया आइडिया है. तो उन्होंने सब अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया. ध्रुवित, देन अर्चित के तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारों को, दैनिश, ध्रुवित, देन वो कौन है, यस, जो मेरी पहली बेंच पे जो बैठते थे, वो सबको इनवाइट किया. राइट, और वो सब मिले. लेकिन जब शाम को वो एक साथ मिले तो प्रॉब्लम ये हुई कि डांस पार्टी के लिए तो इकट्ठा हो गए, लेकिन बारिश हुई नहीं. अब क्या बोलते हैं, अर्चित का तो सीन हो गया. उसने तो सोचा था कि बारिश होगी, ये सब एनालिसिस, इतना अच्छा एनालिसिस किया था. तो एक्चुअली गलती कहाँ पे हुई? कोई बता सकता है गलती कहाँ पे हुई? ओके, लेट मी टेल यू. तो वो चीज समझने के लिए हम 4 फैक्टर कंसीडर करेंगे. वन इज P of R, that is probability of rain in your area. This is the additional information you need actually. पहले क्या था, वो एक चीज आपको याद है तो, कि हमने how many percentage of people are having cancer in that area, वो परसेंटेज बहुत मैटर करता है. तो we should know this, and if we know this, then we can tell in better way whether it will rain today or not. So this is one thing. What is probability of F? Probability of weather forecaster predicting rain. जो weather forecasting website है, वो rain predict करेंगे, उसकी probability है P of F. Then P of F given R, probability of weather forecasting predicting rain when it has actually rained.
अगर बारिश होती है और उसमें उसने रेन किया प्रेडिक्ट किया था उसकी प्रोबेबिलिटी, दिस इज गिवन, ये 90% दिया गया है, सो 0.9, राइट। तो उसका रिवर्स क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट forecasting rain given it is raining. So 0.9 is this value. It's a conditional probability. And the thing which we want to know is probability of raining when the forecaster has predicted the rain. हम हमेशा मिसकंसेप्शन में रहते हैं, ऊपर का ये P of F given R and P of R given F both are different, right? So this is the important thing. Fine. So what we have to find? What is the probability of rain given the forecaster has predicted rain? So P of R given F equal to P of F given R into P of R divided by P of F. ये थर्ड और फर्स्ट पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन होगा और P of F से डिवीजन होगा. ये तीनों पे फॉर्मूला अगर हम बेस थ्योरम, दिस इज बेस थ्योरम, then we can easily find this. So now I want to give the data to you. Assume out of 100 days it rains for 10 days only. आप जो एरिया की बात कर रहे हैं कि आपके एरिया में कितने टाइम बारिश होती है, तो वो प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, जितने ज्यादा दिन बारिश होगी उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. तो this data is given. I assume that 100 days it rains for 10 days only. 100 दिन में से सिर्फ 10 दिन ही बारिश होती है वो एरिया में. This is one data, and the second data given is this: true positive and true negative, right? So out of 100 days, 90 days conditional probability होगी कि अगर बारिश हुई, और probability of forecasting rain given it rains, right? And probability of forecasting not rain given it is not raining. So it is 80 days, 90 days, and from these 3-4 values I want to know, you all have to calculate. I want to know how many times the weather forecaster has predicted the rain. 100 दिन में से कितने दिन के लिए weather forecaster ने rain predict किया होगा, वो आपको बताना है. And the second example question is what is the probability of raining today? आज बारिश होने की probability कितनी है, ये दो चीज आपको बतानी है. You have 5 minutes और be quick, जल्दी से जाइए. और मैंने अभी तक आपको बोला नहीं है कि आप नोटबुक पेन के बिना बैठ सकते हो. So in this chapter also you need to keep a notebook and pen with you. If you are not having it, please bring it as early as possible. अभी जल्दी से जाके ले लीजिए and solve it. I want answer of both the question. Question 1, this answer out of 100 days. We are talking about 100 days. तो आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है, जल्दी से दीजिए. And let me tell you, I am not going to solve this for you. मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला हूँ, because we have solved 2 examples. One is that fruit selection, picking up the fruit from the basket, and second one is cancer diagnosis. And this is the third example, real life example, weather forecasting. And once this is over, we will start with Bayesian network. At least from this we can understand what is the importance of Bayes theorem. Because all these kinds of prediction, forecasting, these are actually part of AI applications. Artificial intelligence की application का ही part है, right? So be quick. And 132 हुआ है, आप जल्दी से आंसर दीजिए. I am waiting in the chat section. Question 1 answer, question 2 answer. अगर आपको question 1 का आंसर मिलता है, question 2 का आंसर मिलता है, तो दोनों साथ में आप लिख सकते हो. अगर आपको कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, then also you can write. Please write down in the chat section.
I am giving you 5 minutes. No one has answered. Are you getting my question? आपको क्वेश्चन समझ में तो आया है ना? 0.0011. So what I do, let me share the whiteboard with you, and I'm going to explain that to you on the whiteboard. So first of all, out of 100 days, there are 100 days, right? Out of 100 days, 10 days rain. Fine. 10 दिन बारिश होती है, right? 100 दिन में से कितने दिन बारिश होती है? 10 दिन. Fine. Now वो 10 दिन, सॉरी यहाँ पे मुझे लिखने दो, 10 दिन बारिश होती है, 10 days rain, ठीक है? And the remaining 90 days, what will be there? 90 days no rain. Fine. इतना क्लियर हुआ क्या आपको? Let me see the answer in the chat section. 0.5263 maybe for first question. Oh, you are not getting my question. What is the first question? पहला question क्या है? पहले पढ़िए चलिए.
द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स, दिन बताने हैं कि 100 दिन में से कितने दिन वेदर फॉरकास्ट किया होगा, वेदर फॉरकास्टर ये जो वेबसाइट है उसने प्रेडिक्ट किया होगा कि बारिश होगी। समझ में आ रहा है? तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ही ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ही ध्यान दीजिए। सो दिस इज दिस, ये चीज है क्या है, 10 दिन, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दिस 10 डेज, आउट ऑफ दिस 10 डेज कितनी एक्यूरेसी है, बारिश होती है तब कितनी एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी है कि ये वेदर फोरकास्टिंग साइट आपको बताएगा कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया होगा कि रेन है, तो 10 दिन में से कितने दिन होंगे, 9 डेज। सो जो 10 दिन बारिश होती है उसमें से 9 दिन वेदर फोरकास्टर ने प्रेडिक्ट किया होता है कि बारिश होगी, ठीक है। नाउ आउट ऑफ दिस 90 डेज, आउट ऑफ दिस 90 डेज, ये 90 डेज में से कितनी परसेंटेज एक्यूरेसी है कि अगर बारिश नहीं है तो ये आपका फोरकास्टर भी बोलेगा कि बारिश नहीं है, तो वो क्या होगा 80%, हाँ या ना, 80% नो रेन, राइट। 80% लोगों क्या बोला कि बारिश नहीं है होगी, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 20% प्रेडिक्ट रेन, हाँ या ना। आउट ऑफ 90 डेज जो बारिश नहीं हुई है उसमें से 80% तो उन्होंने 80 डेज बोला था कि 80% बोला है कि बारिश नहीं होगी, प्रेडिक्शन किया है। और how 80% no rain, just a second, actually when I explained that to you, एक point था, अगर if I share this thing again, so I don't know whether, okay let me save this, whiteboard save, फाइन। सो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आउट ऑफ 100 डेज 90% एक्यूरेसी उसकी है कि बारिश है, देन उसने प्रेडिक्ट किया है कि बारिश होगी। प्रेडिक्शन एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी है कि बारिश होगी। लेट मी शेयर द स्क्रीन एक्चुअली, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। दिस थिंग कि रेनी वेदर है, बारिश हुई और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि रेनी वेदर है, वो चांसेस कितने हैं 90%। बारिश हुई और आपने भी प्रेडिक्ट किया था, फोरकास्टर ने भी प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी, वो उसके एक्यूरेसी कितनी है 90%। मतलब 100 दिन जो बारिश होगी अगर वो हम कैलकुलेट करें तो आउट ऑफ दैट 90 दिन 90 डेज में उन्होंने प्रेडिक्ट किया ही होगा। दूसरा क्या है 80 आउट ऑफ 100 डेज, अगर सच में ड्राई वेदर है मतलब बारिश नहीं हुई है और उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया है कि बारिश नहीं होगी, उसके एक्यूरेसी कितनी है 80%, वो ऑलरेडी दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सच बारिश नहीं है, ऐसे 100 दिन हम ले रहे, उसमें से 80 दिन तो उन्होंने बोला ही होगा कि बारिश नहीं होगी, बाकी के 20 डेज में उन्होंने ये बोला होगा कि बारिश होगी, राइट। So this is this now, is it clear, Pal? Is it clear to you how 80% no rain, because it is given, right? तो 20% डेज में बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, फिर भी 20% टाइम उन्होंने फोरकास्टर ने प्रेडिक्ट किया होगा कि बारिश होगी। अब 90 का 20% अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना होगा, तो बता सकता है 90 का 20%, इट्स 18। तो इस पे से मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर बारिश हुई
10 दिन बारिश हुई, उसमें से वेदर फोरकास्टर ने प्रेडिक्ट किया होगा 9 दिन प्रेडिक्ट किया होगा कि हाँ बारिश होगी, और साथ में जो बारिश नहीं हुई है उसमें से भी 18 दिन उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश होगी। तो टोटल बारिश होगी उसके प्रेडिक्शन कितने हुए, 9 + 18 दैट इज इक्वल टू 27। तो वेदर फोरकास्टर ने कितने दिन प्रेडिक्ट किया कि बारिश होगी, इट इज 27 days। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability of getting rain given the forecaster is good, equal to probability of getting forecasting given rain divide into probability of rain, right, divided by, okay, just a second, divided by probability of forecasting। so this is the answer, right। ये चीज जो है ना, ये चीज हमें इस साइड, इससे इस साइड वाली चीज आप समझिए, ठीक है। नाउ what is the meaning of this, probability of forecasting given rain, it is 90% probability, that is answer is 90, 0.9। what is the probability of rain, rain की probability कितनी है वो एरिया में, 10 days out of 100 that is 0.1, yes or no, then divided by, this is divided by what, 0.9 probability of this is 0.27, so 0.9 into 0.1 divided by 0.27, this will give you the final probability, and that is, I want answer from your side, 0.33। if you want to calculate this कि आपको एक्चुअली प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है, तो कित क्या होगा, 27 days एक्यूरेसी कैलकुलेट की, उसमें से एक्चुअली रेन कितनी बार हुआ, नो। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी यूजिंग काउंट 9/27 दैट इज आल्सो 0.33, राइट, एग्जैक्टली। सो आंसर इज 1/3, गुड। सो नाउ दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ये किसका आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, राइट। This is the answer of first question, that is 27 days. Answer of second question is 0.33, right? That's it. Let me share the screen again. So the answer of first question is 27 out of 100 days, 27 days उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, बट एक्चुअली में बारिश कितने दिन हुई, प्रेडिक्शन के बाद बारिश कितनी बार हुई, सिर्फ 9 बार, क्योंकि वो ट्रू एंड दैट इज फॉल्स पॉजिटिव। जो 18 डेज जो है ना, दैट इज फॉल्स पॉजिटिव, क्लियर। तो होप कि इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हो। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर we'll be starting with Bayesian network. We will define relationship between dependency between different objects in uncertain world. ये जो probability through will represent conditional probability, joint probability using graphical representation. So we will see Bayesian network tomorrow. That's it for Bayes theorem. Hope ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने आपको जो बेसिक करवाया है और बेस थ्योरम के एग्जांपल लिए हैं, उसको आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि एक्चुअली बेस थ्योरम का यूज हमारे एआई में क्यों है, व्हाई वी हैव स्टडीड इन दिस, एंड फ्यूचर में आपको कोई क्वेश्चन आए तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस, दैट इज माय होप। सो इफ सम न्यू प्रॉब्लम कम्स
फॉर एग्जाम्पल कोविड-19, अगर किसी ने कोविड-19 के टेस्ट के लिए खुद से, सपोज मैंने खुद से एक नया टेस्ट जनरेट किया और गवर्नमेंट को चेक करना है कि मेरा जो स्कीम है, मैंने जो टेस्टिंग मेथड रखी है, मेरा जो टेस्ट है वो कितना बेटर है, तो द सेम concept can be applied there, right? So there are so many use or applications of Bayes theorem only. Bayes theorem का ही बहुत सारे applications है, and that will be solved using additional things using Bayesian network also. So that's it from my side. If you are having any question, you can ask. Otherwise, you can write down what is the percentage or what is the probability that you can solve this, solve the example of Bayes theorem. Bayes theorem का example आप solve कर सको, उसकी probability क्या है लिखिए chat section में. This is called actually prior probability. What is the probability that you can solve the example of Bayes theorem? 1. Good. Example of Bayes theorem means any example, right? So please write down. बाकी सब कहाँ चले गए भाई? सब घर पे फोन रख के गायब हो गए क्या? 0.8. गुड. मैं देख रहा हूँ बहुत there are some students they are very regular in giving the answer. Okay. So आप जल्दी से आंसर दीजिए. मैं साथ में दूसरा भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अगर मैं आपको बता दूं कि मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, यही एग्जांपल होगा, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द एग्जांपल? यही मतलब जो 3 एग्जांपल मैंने करवाया है उसमें से, राइट? एग्जैक्टली. सो प्रोबेबिलिटी विल गेट चेंज. आपको खुद को समझ में आ रहा होगा कि किसी ना किसी की प्रोबेबिलिटी चेंज होगी. अरे महक तो बोल रहे कि 0.8 ही है अभी भी, मतलब सेम एग्जांपल सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी. चलिए कोई बात नहीं. मे बी यू आर फेसिंग सम इश्यू. Still, if you are having any doubt, you can ask me right now, or otherwise you can ask me later on. Actually time is up for this lecture, so what I'm going to do, I'm going to end this session right now. The students who are having lab session can join again in 1 or 2 minutes. You can take a break of 1 or 2 minutes or 5 minutes and can join again, right? Okay, done.